Rise and shine, my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. I have been sharing with you a number of strategies to enhance your teacher's toolkit so that you can bring engagement, excitement, enrichment in your classes. Right, so we have been nowadays talking about competency based education. हमने competency based education क्या है उसके बारे में बात किया, learning opportunity matrix कैसे बनाना है, lesson plan के कौन कौन से components हैं उनको कैसे करना है, और अपनी जो formative assessment हम add करते हैं in our lesson planning, उस फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सी 5 स्ट्रैटेजीज हैं, डालन विलियम की स्ट्रैटेजीज को हमने कल सीखा। और आज आई हैव come up with you see, I want to share with you different AFL tools, assessment for learning tools for competency based education. Here is a list of 70 AFL tools, 70 AFL tools। अगर हम इसको you see हर वीक में भी एक अपनी क्लास में यूज करके you see लर्न करना शुरू करें, हमारी टीचर स्कूल की कितनी enhanced हो जाएगी, and you see there will be some change that you will be bringing in the teaching learning style in your classroom, right? So there are 70 AFL tools. I will be sharing with you in small videos, 10 tools in each video. So you will be getting 7 recordings, 7 parts for AFL tools, right? 10 in each. So today we're gonna begin with the first tool that you have to add to your teacher's school toolkit. It is students write questions. Right now, this is about you ask your students to write questions related to any kind of new topic. This is a kind of KWL also. और इसके लिए ये थोड़ा सा इसमें ट्वीक करके बताई गई हैं कुछ एक चीजें कि आप अपने बच्चों को ये बोलिए, जो उनको क्वेश्चंस हैं उनको समझ नहीं आए उनको मोटिवेट करिए, दे विल बी एबल टू राइट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव शेयर्ड इन द क्लास। उसके लिए आपको क्लास में एक क्वेश्चन बॉक्स लगा सकते हैं, जैसे हम सजेशन बॉक्स होता है, क्वेश्चन का जार बना सकते हैं, और स्टिकी नोट्स पर बच्चे इवन आपके लगा सकते हैं कि व्हाट आर देयर क्वेश्चंस। नो, दिस इज अप टू यू। क्वेश्चन जार और सजेशन बॉक्स रखने का क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत बार क्या होता है कि हम क्लास में कई बार कुछ बच्चे क्वेश्चंस आगे शेयर नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मे बी टीचर को मेरा क्वेश्चन ना अच्छा लगे, स्टूडेंट्स को अच्छा ना लगे, वो कहेंगे सिली क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए क्वेश्चन जार, क्वेश्चन बॉक्स आप लगा सकते हैं, जिसमें कि बच्चे अपने टॉपिक से रिलेटेड दे विल बी एबल टू शेयर द क्वेश्चंस, राइट, इवन विदाउट राइटिंग देयर नेम्स ऑल्सो। उसके लिए encourage them for writing questions. Okay, so this is one AFL tool. And then the second one is moving ahead. First of all, now we have encouraged students to write questions. Now we have to encourage students to ask questions. You need to create such kind of opportunities where students, they should come forward and they should ask questions. A question box for the written questions offers a different means of communication for students. बच्चे verbally भी पूछ सकें, बच्चे question box में भी डाल सकें. So, I mean, there are the different kinds of strategies that you should use in your classes. When we talk about inclusive classroom, when we talk about differentiated learning, तो उसमें जरूरी नहीं कि हर बच्चा should be coming forward to ask questions. It may happen some of the students, they would like to put the questions in the question box, so you can go for that. इससे क्या होगा कि बच्चों के मन में उस चैप्टर, उस कंटेंट के प्रति जो भी कुछ एम्बिग्युइटी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, and they'll be able to ask those questions very freely without any kind of fear, you see. Now the next one is comment only marking. The comments जो है वो हमें यूज करना है एज अ मार्किंग. आई मीन इट्स नॉट, वी आर नॉट गिविंग थम्स अप, वी आर नॉट गिविंग थम्स डाउन, वी आर नॉट गिविंग एनी मार्किंग, एनी काइंड ऑफ punishment to the students, any kind of rewards. We are talking about comments. We let us bring this culture in our class where we will be asking our students also along with the teacher, like when they are going for self assessment, when they are going for peer assessment, अपना काम assess करते हैं, अपने peer का काम assess करते हैं, उसमें भी they should come up with the kind of feedback. फीडबैक कौन सी हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था. We talked about the 5 different you see types of feedback.
जो कि बच्चों को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करे, राइट? वी टॉक्ड अबाउट रीडू, वी टॉक्ड अबाउट revisit, we talked about drills and practice. I mean, such kinds of different you see aspects of the feedback back we discussed in the last video. So that you should encourage your students, so they should be able to use comments or the feedback even while assessing self work or maybe the peer work. Now next is mid unit assessment. Now, this mid-unit assessment is like usually what happens in our classes when we take students test, when we want to assess their learning. हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, एक यूनिट कंप्लीट होता है, हम उसके एक टेस्ट ले लेते हैं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, यही हम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। पर एक टॉपिक में, एक चैप्टर में कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स होते हैं, इतना सारा कंटेंट हम एक यूनिट में एक्सेस नहीं कर पाते, एक टेस्ट में नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए यू हैव टू डिवाइड your chapter either into 2 parts or into 3 parts depending on the length of the chapter, कि आप बीच बीच में से mid unit assessment लें, so that you will be able to support their learning, you will be able to give them proper feedback, right? Use these kinds of tools, right? These tools, they have been shared by CBSE in one of the sessions with all of us. 70 tools they have shared with us. See, use them in your class and enhance your teacher's toolkit. So another one is might. Like when you ask questions to your students, make sure you use the word might. अब might क्या है? Magical word. इससे क्या होता है? Just look at the example. You ask in your class, what is the meaning of democracy? So आप बच्चे की जो thinking है, उसको जो आंसर करना है, उसको एक लिमिट कर दिया आपने कि उसको डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग बताना है कि क्या है, गलत नहीं होना चाहिए, वो वर्ड टू वर्ड वो होना चाहिए जो कि आपने क्लास में नरेट किया है या बुक में लिखा है या क्या है। बच्चे के मन में एक फियर भी आ गया कि मुझे मेरा आंसर कहीं गलत ना हो जाए। जिसके मन में एक क्वेश्चन होता है वो आगे बढ़ के आंसर नहीं बताता। नाउ द मैजिक वर्ड माइट, आपने ये ऐड किया, व्हाट माइट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बी? अब द चाइल्ड इज फियर फ्री, बच्चे को पता है कि माइट है कि मेरा आंसर गलत भी हो जाए तो भी मैम ने तो बोला है, सर ने तो बोला है कि माइट क्या हो सकता है डेमोक्रेसी का मतलब। और वहां पर बच्चे ने लिमिट किया खुद को टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए या आपके बताए हुए आंसर के लिए। नाउ द चाइल्ड इज फ्री, द चाइल्ड कैन add his or her comments, suggestions, his thoughts also in that कि डेमोक्रेसी का मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि it is always we have to say for the people, of the people, by the people, ये जरूरी नहीं है। They will be coming up their own thoughts as well. Make sure you use might, magic word in your questions and see the magic, right? Now, the next one is wait time. When in our classes we do ask our students any kind of questions, हम बहुत impatient हो जाते हैं कि बच्चे ने question हमने बोला तो फटाफट 2 4 5 जो हाथ खड़े हैं उनसे हम आंसर पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए है ये वेट टाइम, पॉज टाइम शुड बी देयर। और 2 टाइप का वेट टाइम की बात कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले कि जब टीचर ने एक क्वेश्चन पोज किया क्लास में, द टीचर हैज टू पॉज फॉर सम टाइम कि बच्चे उस टाइम पर कुछ सोच रहे हैं। थिंकिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम शुड बी देयर। और उसके बाद जब स्टूडेंट से आपने रिस्पॉन्स लिया, उसके बाद में अगेन यू हैव टू वेट, यू हैव टू टेक अ पॉज। उससे स्टूडेंट को टाइम मिलता है कि मैं इसको एलैबोरेट कर पाऊं, मे बी अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ PPPB strategy. Pose a question, pause for some time, then pounce on the child. When the child has answered, बच्चे का आंसर आपने लिया, उसके बाद again you pause and then you can bounce the आंसर टू द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और वो बाउंस कैसे करना है, सेम क्वेश्चन पूछना है या उसको ट्वीक करना है, उसके बारे में हम अगले टूल में बात करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। नाउ नेक्स्ट इज ओपन वर्सेस क्लोज्ड. You know very well, you have been using in the classes. There is a lot of difference between open-ended and closed-ended questions. Closed-ended question पूछ के हम बच्चे की thinking को limit करते हैं and we expect the same answer to be given as it is written in their notebooks, as it is there in the textbooks, or as we have discussed in the class. अब ये question को हम tweak करते हैं. We ask the students to share their own thoughts. Like if I generally ask, did you go out last night? The answer will be yes or no. Did you do this? Yes or no. Okay. Where is this located? They will be giving us the appropriate answer. If I ask,
what did you do last evening? They will be able to give you elaborative open-ended questions. So make sure you tweak your questions accordingly and then ask the students to come up with that. So go for open-ended questions. Next is exemplar work. This strategy is really very effective, as in when you ask your students, you share with them कि बच्चों हमने ये काम करना है, art integrated project है, ये आपको बनाना है. Students, you have to do like that. See, in the air, we should not share all those things. हम at least उनके साथ में 2-3 एग्जाम्पलर शेयर कर सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पलर हैं. इसमें बच्चों ने इसको इस तरीके से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट किया है. इसमें एक विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, इसमें रिटन टास्क बहुत अच्छा है, इसमें कमेंट्स हैं, इसमें साइटेशंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं. नाउ यू हैव टू सेट योर माइलस्टोन्स अकॉर्डिंगली. आपको किस चीज में आप अच्छे हो, किस चीज को आप ज्यादा एनहेंस करना चाहते हो, या सबको बैलेंस रखना चाहते हो, या इसके बियॉन्ड जाना चाहते हो. ऑलवेज शेयर सम एग्जाम्पलर वर्क विद द स्टूडेंट्स. डू नॉट टॉक इन द एयर about anything. Now, this is a student marking. See, ask your students also to take part in marking. Marking, I mean, हमेशा ये नहीं कि आप ही बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं. बच्चों को, जब स्टूडेंट्स को आपने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ टास्क दिया है, कुछ प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए रूब्रिक्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग, व्हेन यू शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स, तो वो रूब्रिक के बेसिस पर आस्क द स्टूडेंट्स टू सेल्फ असेस और मे बी पीयर असेस. Like for example, you have taken different rubrics. You have taken content, presentation, right? Or maybe research work, उसमें कितना है, right? Whether it is according to the theme or not. So different rubrics you have taken. So accordingly, ask your students to give marks to themselves or to the peer group depending upon the rubrics. Why you always have to assess? Why always you have to mark? राइट, दिस यू कैन ऑल्सो गो हैड. इसका फायदा क्या होगा आप सोचोगे? अरे स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग. उनको पता चलेगा वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और दे विल बी एबल टू एम्पैथाइज. कि हमेशा जो कहते हैं टीचर ने मुझे इतने मार्क्स नहीं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका काम कैसा है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो उसमें कैसे माइलस्टोन सेट कर पाएंगे. सो द लास्ट स्ट्रेटजी, लास्ट टूल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फॉर टुडे इज making aims clear. You need to make your aims very clear. The learning intentions, the learning objectives that I've already shared with you in the last video that I shared with you yesterday, and that I talked about कि learning intention जो है बच्चों के साथ जब share करनी है, there are 3 stages for that. You need to clarify the learning intentions, you need to make them understand the learning intention, and you need to share or co-create the learning intentions. Learning outcome, when you are writing it on the board, you have written. Now you have to discuss with the students, let them understand and ask them to contribute. At least one group should contribute, giving one learning outcome to you. So that, I mean, ऐसा क्यों होता है? जब हम एक साथ essential agreement बनाते हैं क्लास में, हम ownership लेते हैं. essential agreement बनाते हैं ना क्लास में, ग्राउंड रूल बनाते हैं, क्लास में बैठने के क्या रूल्स हैं, क्लास में टीचर के क्वेश्चन आंसर बताने के क्या रूल्स हैं, और डिफरेंट जब हम उनके साथ में ये स्टेप्स शेयर करते हैं, जब वो उसमें पार्ट एंड पार्सल होते हैं, दे टेक द ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमने क्रिएट किया है, वी हैव को क्रिएटेड दिस लिस्ट, right? So that's all for today. I'll be sharing with you more strategies, as I've already shared 10 steps, 10 tools of AFL in one video. So keep on watching videos at my channel. Do subscribe to my channel so that you will be notified as and when I upload another video, right? Thank you, all of you, from Meenakshi Narula at Mentoring the Mentors.